have brought a very interesting topic because today I'm going to be a teacher for you. Okay, I'm going to share lots of English concept and rules because I feel that we make many mistakes in terms of English speaking and grammar rules. Okay, so I'm going to share a few English sentences and we will see whether they are correct or not, and then we will understand the correct sentence and their rule. Okay, okay, so here I have 20 sentences which are incorrect, and we will correct then these sentences and then we will understand the rule also. So the first rule is with singular noun there should be every with singular noun, every with plural noun. Okay, so this is the sentence. The sentence is every student in this intelligent is intelligent in the class. So if you can comment if you can see me live in a Facebook, and if you are able to understand what is wrong with this sentence, please comment in a comment box. Okay, so whenever you watch this video, please comment in a comment box and the chat box what is wrong with this sentence. So I will open the correct sentence now. The correct sentence is, let me open it in a presentation mode. Yeah, so the correct sentence is every student is intelligent in the class. See what happened, एवरी के साथ मतलब हर एक, तो मतलब एक वचन हो गया. ओके, दिस इज अ सिंगुलर नाउन. सो सिंगुलर नाउन के साथ स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए था, स्टूडेंट होना चाहिए था, एक वचन होना चाहिए था. सो वी आर सेइंग दैट हर एक स्टूडेंट क्लास में इंटेलिजेंट है, सो देयर शुड बी स्टूडेंट नॉट स्टूडेंट्स. ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर नाउन. ओके, नेक्स्ट रूल, using but and although together, it is again a mistake. Okay, when we use although and but together, because although itself is a meaning of इसके बावजूद. Okay, so उसमें but लगाने की जरूरत नहीं है. For example, although it was raining but we went to market. So these sentences are already contradict sentences, तो उसमें फिर से but लगाने की जरूरत नहीं होती है. Okay, so what will be the correct sentence? Although it was raining, comma, we went to the market. मतलब ठीक है कि बारिश हो रही थी, उसके बाद भी हम लोग बारिश गए, मार्केट गए. तो वहां पे ऑलरेडी although में in contradiction आ गया है. So you don't have to add additional but to show the contradiction. Okay, and the rule is that you cannot use although and but together. Okay, now next sentence is married with or married to. क्या होना चाहिए? So the incorrect sentence is she is married with an engineer. So whenever we are using married, तो हमेशा वहां पर क्या यूज करना है? To. Preposition has to be to, not with. So the correct sentence has to be she is married to an engineer. Okay, so it has to be to, not with. Next sentence is it's and its. It's a very common mistake, I tell you. यहाँ तक कि मुझे भी 5 साल पहले पता नहीं था what is the difference between its and where to use what. Okay, so it's raining Saturday morning. This is the sentence. Now it is incorrect. Why it is incorrect? Because it's without apostrophe s, without apostrophe meaning इसका. ठीक है, इसका मतलब होता है इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी मीनिंग इज इसका. ओके, फॉर एग्जांपल माय डॉग्स बेल्ट. ठीक है, सो वहां पे हमें यदि डॉग्स लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? डॉग एपोस्ट्रोफी एस बेल्ट. ओके, बट यदि मुझे लिखना है इसका बेल्ट, ठीक है, कुत्ता मेरे सामने खड़ा हुआ, माय डॉग इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वांट टू से इट्स बेल्ट इज ऑन द टेबल, तो मैं क्या बोलूंगी? विदाउट एपोस्ट्रोफी इट्स लगाऊंगी एंड इट्स बेल्ट इज ऑन द टेबल. ओके, विथ एपोस्ट्रोफी मतलब है इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज. विथ एपोस्ट्रोफी इट्स मीनिंग it is a short form of it is. So let's see the correct sentence. Correct sentence is it is Sunday morning, which is the short form of where it is the short form of it is. Okay, so the other example is it's a possessive pronoun for things. Okay, so it's a possessive pronoun for things. Things के लिए जब अभी हमें possession दिखाना होता है, possessive pronoun को pronounce करना होता है या बताना होता है, तो वहां पे हम it's विदाउट एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स है द फ्लोर लुक्स ग्रेट विथ
इट्स न्यू मैट, मतलब कि जब फ्लोर बहुत अच्छा लग रहा है इसके न्यू मैट के साथ, तो वहां पे विदाउट एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है. इट्स रेनिंग आउटसाइड, सो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इट इज रेनिंग आउटसाइड. सो दिस इज हाउ इट्स विद एपोस्ट्रोफी एंड इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी आर डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट वन, देयर, देयर, दे आर. ओके, ये तीनों अलग अलग हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम रहता है बट उनका मीनिंग अलग है. सो फर्स्ट देयर इज ए THERE. फर्स्ट वन इज टू इंडिकेट द प्लेस. ओके, टू इंडिकेट द लोकेशन. देयर इज अ डॉग, वहां पर एक डॉग है. THEIR, देयर. देयर मतलब कि उनका, दिस इज अगेन टू शोकेस द पोजीशन. And they apostrophe RE means they are. It is a shortcut of they are. Okay, so every there has a different meaning. So यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है, पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पेरेंट्स वर्क फॉर THEIR देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए काम करते हैं, तो देयर हैज टू बी द मिडिल, THEIR देयर चिल्ड्रन. ओके, so let's see the correct sentence. Now the rule is also shown as I mentioned. An example is children are playing with their toys. They, so यहाँ पे their लगा है, उनके खिलौने के साथ खेल रहे थे. So this is showing the possessive pronoun. Then next one is there are many shops. So this is showing the, indicating the location. And next one is they are, they apostrophe RE is a shortcut of they are. Okay, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो लोग मुंबई दिल्ली जा रहे हैं. So they are going to Delhi. तो इस तरीके से तीनों they are का डिफरेंस मीनिंग होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज unique and most unique. Okay, what is wrong with it? This is the most unique dress. See, unique itself is a एक टॉप लेवल सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो उसके साथ कुछ और कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, राइट. तो वहां पे मोस्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल, if you are perfect, so there cannot be things most perfect. You are perfect, which means perfect. So you cannot compare a perfect thing like more or most, right? So the correct sentence would be, the correct sentence would be, this is the unique dress. You don't have to say most unique or more unique. No, you cannot compare with the superlative degree. Okay, and then for example, extreme, perfect, it does not require any comparison. Okay, for example, the job is perfect for him. These conditions are ideal. So these are the superlative, the unique things, right? So they cannot be compared and they cannot be judged. Okay,